तो मैंने चेक किया है सब एंड या इनके आंसर्स गलत है, वही बोल सकता हूँ मैंने डबल चेक किया खुद के आंसर्स। हाँ और वे सही निकल रहे हैं यार, तो ऑफ कोर्स उनके आंसर्स गलत है और या और क्या कर सकता हूँ। 21, लेट्स डू इट। Okay, figure shows the radar screen with the dots denoting respective positions of the Indian Sukhoi A, B, C and PK. Okay, जो भी है, all are fine. A, B, C. अच्छा, Sukhoi A, Sukhoi B, Sukhoi C. अच्छा, ऐसे तीन जो भी है, आई थिंक प्लेन्स वगैरह जो भी है। तो राइट की डायरेक्शन बताइए कहाँ कहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं और राइट ए बी सी कहाँ कहाँ पे, ये है, ये बी है, सी ऐसा है, फाइन। All are flying with constant velocity in horizontal plane. Sukhoi A reports to the ground control that E is moving due north with velocity 160. क्या? A reports that E is moving to north. ये north में जा रहा है with 160. अच्छा, so wait, इसकी तो unknown direction, right? अच्छा ठीक है ठीक है. At the same time, Sukhoi B reports that it's moving due east at 120 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो ये बी रिपोर्ट कर रहा है। थ्रू वॉट मिनिमम एंगल शुकोय सी ऑल्सो मूविंग इन नॉर्थ ईस्ट टर्न्स सो दैट इट इज अलाइंड इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ई। अच्छा ठीक है ना, समझा। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो रहा है, ये moving with 160 in the north, right? And we know that A is actually moving in the east, right? So it's like 160 in this direction plus something along this direction, right? So x पता नहीं क्या है ये। And then with respect to B, ये ऐसा हो रहा है। So like according to B ऊपर, right? So according to B ऐसे जा रहा है, but B of course कुछ भी velocity के साथ में ऊपर जा रहा होगा, बस like Y पता नहीं क्या है ये। And it's moving with what? 120 meter, right? Okay, 120 meter per second in east of course, right? और ये नॉर्थ में जा रहा है, फाइन। सो वी नो क्या हो रहा होगा, वी नो कि ये ऊपर 160 से जा रहा है एंड देन 120 से ऐसे जा रहा होगा, फाइन। ओके सो इसका जो एंगल बनाएगा ये, राइट, सो लाइक ये 160 120 इसका एंगल क्या रहने वाला है, 16/12 व्हिच इज लाइक 4/3, सो दिस शुड बी 4/3, दैट्स व्हाट दिस एंगल इज। और ये 45 डिग्री से जा रहा है, तो अपने को बस ये लाइन को चेंज करना है टू एंगल 4/3, राइट। सो कितने एंगल्स चेंज करना है अपने को, उसका tan क्या रहेगा, उसका tan रहेगा 4/3 माइनस 1/4/3 plus 1, right? Oh no, it should just be 1 plus 4/3. Well, दोनों सेम ही चीज है, क्या फर्क पड़ रहा है, right? uh, yeah, I guess that makes sense. So this will just be 1/7. So tan inverse of 1/7, that's how much it should do, right? But then tan inverse of, like, it's a small angle, right? So approximately 1/7, right? So 360/7 कितना होता है, almost 360 upon, I don't know, tan inverse रहेगा और छोटा रहेगा उससे, right? So like actually 1/7 से ही छोटा, तो फिर उससे थोड़ा सा छोटा नंबर यानी कि 360/8 I guess. So 360/8 is like 90/2 which is 45 degree. Oh ये बहुत बड़ा हो गया, right? या बहुत बड़ा हो गया इनफैक्ट। हाँ सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, इन रेडियंस 1/8 रहेगा, राइट। सो अपने को इन डिग्रीज चाहिए, लाइक ओके 1/8 टाइम्स, so in degrees it's going to be 180 upon pi, right? That should do it. So this is like, ये हो जाएगा 90, it's gonna be 4, ये हो जाएगा 45, it's gonna be 2 pi, so 45 upon approximately 6 बोल सकते हैं, जो भी है। So 3 से reduce करो, 15/2, 7.5 something, उतना है ये। So हाँ उतना, and then it's supposed to be anti-clockwise, so 8 degree anti-clockwise, I guess that makes sense, so B is the answer. Next question, 22. 22 is two blocks of equal masses are connected by a string and are kept on rough horizontal surface. Quotient of friction between the blocks and the surface is mu. दो blocks है, friction mu है, okay. F1 minus F2 is less than 2 mu g and it's bigger than 0. अच्छा F1 बड़ा है and जो right, okay, F1 minus F2 is less than 2 mu g, fine. Then choose the correct statements. अच्छा तो ये जो पूरा सिस्टम रहेगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, F1 - F2 नेट फोर्स है, एंड देन फ्रिक्शन ऐसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा, या सो वी नो विदाउट फ्रिक्शन ये ऐसे जाने वाला है, सो ऑफ कोर्स फ्रिक्शन दोनों में ऐसा लगेगा। ओके सपोज ये काफी बड़ी क्वांटिटी है, ओके नहीं अच्छा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज 2 म्यू जी आराम से हैंडल कर देगा यार, ओके सो F1 - F2 से बड़ा है, राइट, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स कि ठीक है ये मूव नहीं होगा,
right? It cannot move, of course. So direction of friction on block A is towards right. Look, the thing is कि यानी ये move नहीं हो रहा है, right? So अगर ये मतलब individually मतलब somehow balance हो जाता है, then it's good, right? Yeah. So maybe ये F1 है, maybe ये F2 है. Yeah, that could be the thing. Uh, sure. So ये F1 less होगा mu mg से, and F2 is also less than mu mg, right? So ऐसा हो सकता है कि उनका yeah, like that can happen for sure. Direction of friction on block A is towards right. No, it's towards left, of course. Right. Direction of friction on block B maybe towards right. So left or right. हाँ, ये depend करता है. So अगर suppose इसमें tension है, right? So यहाँ पे tension T है. T, and by the way, okay, F2 जो है that will in fact be less than F1, और यहाँ पे friction भी add करना है, right? So F2 से कोई तो भी छोटी quantity रहेगी tension की. So F1 minus कोई तो भी F2 से छोटी quantity, right? वो इस पे लग रही होगी, which is in this direction, of course, right? Net in fact force भी रहेगा इस direction में. So friction को oppose करना है, it's gonna go to left all of the time. B का है variable. Okay. Tension in the string must be 0. No, not necessarily. कई बार से सोचता है कि ना हो. Friction force on B must be 0. मतलब Q अगर नहीं रहा तो क्या होगा? मतलब अगर तुम इस पे लगा रहे हो, हाँ अगर वो 0 नहीं रहा तो कौन सी बड़ी बात है? Why should it be 0? I don't get it. Okay, अपने को करेक्ट सिंबल चाहिए, राइट? So ये तो करेक्ट नहीं है. And block 8 towards right. That's direction of friction. No, not like that. तो लेफ्ट होना चाहिए, राइट? Okay, direction of friction on block B. Suppose like F2 0 or something, then friction is not towards right? Yeah. Direction of friction on B may be towards left or right. Yeah, I guess B is the only correct thing. Next question, 23. The vernier of a vernier scale is divided into 10 divisions which coincide with the 9th division. अच्छा, of the main scale. ठीक है ना, basically normal type का ही है. So yeah, 0.1 is the least count. Each main scale division being 0.5 millimeter. अच्छा ठीक है. So 0.05 millimeter is the least count. When the two jaws of the instrument are in contact, the fourth division of the vernier scale coincides with the main scale division. अच्छा, वो कॉन्टैक्ट में था फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, राइट? लेट मी थिंक अबाउट इट. तो ये एक जॉ है, यहाँ पे मेन स्केल रहने वाली है, और ये जब कॉन्टैक्ट में है लाइक दिस, श्योर. तो इनमें से एक वर्नियर स्केल है, इसको मैं वर्नियर स्केल मान लेता हूँ, एंड दिस इज लाइक द मेन स्केल, श्योर. तो ये 0 मार्क रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे मार्किंग की हुई है. तुम बोल रहे हो कि फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मार्क, ओके, वो जो है दैट. सो ऑफ कोर्स तुमने पेंट गलत किया, उतना ही है ना, और क्या है. यहाँ पे सपोज 0 है, देन भी तुमने यहाँ पे 0 पेंट कर दिया और समथिंग लाइक दैट, उतना ही हुआ होगा ना, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन. तो ये थोड़ा सा पीछे है देन यूजुअल से पीछे थोड़ा सा, फाइन. एंड द 0 ऑफ द वर्नियर लाइज टू द राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल. राइट ऑफ द 0 ऑफ द मेन स्केल. अच्छा, ये 0 उधर है. वेट, व्हाट? फोर डिवीजन ऑफ, अच्छा, विद अ मेन स्केल, नॉट द 0, विद अ मेन स्केल डिवीजन. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो इनिशियली कैसा है, तुम्हारी जो मेन स्केल है उस पर जो मार्किंग है उसका जो फोर्थ डिवीजन है दैट corresponds to some division on this thing, और ये 0 yeah shifted है, right? So something like this thing. अच्छा, सो अच्छा नहीं, इसका फोर्थ डिवीजन, राइट? ओके, दैट ठीक है, समझ गया मैं थोड़ा बहुत. ओके, कूल, राइट. When a spear is inserted between the jaws, the 0 of the vernier scale slightly to the right of 1.8 centimeter, and the sixth vernier division coincides with the main scale division. The diameter of the spear is okay. ये काफी complicated question हो गया ये तो. ठीक है. वेट, उन लोगों ने अपने को एरर तो बताया है, बट ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है ना. Contact with each other, the fourth division of the vernier scale coincides with the main scale division.
तो दोनों जॉस कांटेक्ट में है, फाइन। लेट्स से कि इतना जो है दैट्स द पार्ट दैट वी केयर अबाउट। ओके, सो अभी यहाँ पे जीरो था, आई डोंट नो, ये जो जीरो है दैट्स एक्चुअली टू द राइट ऑफ इट। या तो ये जीरो स्टार्ट ही मतलब राइट से किया इन लोगों ने, थोड़ा बहुत इसमें गैप है इनफैक्ट। और वो गैप कितनी है, ऑफ कोर्स तुम जब इसको स्लाइड करते हो राइट, तो ये जो छोटी सी गैप थी राइट, या यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ पे या लाइक ये जो एक्स्ट्रा मेटल का पीस है अगर वो नहीं रखते तो ये मैच हो रहा होता राइट, ऑफ कोर्स। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है, बस उतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ दैट मेक्स सेंस। ओके, तो अब क्या हो रहा है इसमें, व्हेन द स्पेयर इज इंसर्टेड बिटवीन, तो द zeros of the vernier scale lie slightly to the right of 1.8 centimeter and the 8 centimeter, what, इसमें सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, इसमें तो मिलीमीटर चल रहा था ना सब कुछ। The right of 1.8 centimeter and the sixth vernier division coincides with the main scale. What the hell, 1.8 centimeter, seriously? Okay, that's like 18 millimeters, but इसका least count 0.5 है, मतलब main scale का, of course. So, oh god, मतलब 18.5 अगला डिवीजन रहने वाला है, right? I guess so. So 18 point something. That's what we talk about, right? So 18 तो है ही, प्लस जो लीस्ट काउंट है अपना विच इज 0.01, सॉरी 0.05 टाइम्स, सो वर्नियर स्केल का कौन सा है, सिक्स डिवीजन को साइड कर रहा है दिस टाइम, सिक्स, दैट शुड बी नोटेड। स्टैंडर्ड वर्नियर वर्नियर कैलिपर है ना, दैट्स व्हाई इट वर्क्स। सो ये हो जाएगा 18 प्लस 0.3 इज लाइक 18.3 इज द थिंग, बट देन माइनस ऑफ कोर्स जो इनिशियली इसकी रीडिंग थी वो क्या थी कि ये फोर्थ रीजन, या लाइज टू दैट राइट, lies to the right of the zero of the main scale division, of course, and the fourth division is coinciding. So like that's going to be 0. That's going to be 4 times the least count, I guess, which is 0.05 times 4, which is 0.2, right? So 18.1 should be the thing. Millimeter, of course. So 1.81 centimeter. So 23 का answer B most likely. Yeah. Next, 24. 24 is two masses of 5 kg and 15 kg respectively are connected by a massless spring, and a constant force is applied on the 15 kg block as shown. 5 kg 15 kg ने force लगाया 15 kg वाले block पे, okay, if at an instant the 5 kg mass has acceleration of magnitude 10 meter per second as shown in the figure. कौन सा 5 kg वाला मास, इसकी एक्सेलरेशन में दी हुई है, ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है कि क्या है, सरफेस ऑफ स्मूथ, फाइन। तो इसका एक्सेलरेशन में दिया हुआ मतलब कि 50 न्यूटन इस पे लग रहा होगा, ओके। 5 kg mass has acceleration of 10 meter per second square, okay. Find the magnitude of acceleration in meter per, oh come on seriously, टच में, ओके। तो इस पे क्या लग रहा है, इस पे 500 ऐसे लग रहा है, इस पे 500 ऐसे लगेगा, सो बेसिकली इस पे, सॉरी इस पे 50 ऐसे लग रहा है, इस पे 50 ऐसे लगेगा, so it's going to be 150 basically in this direction. So yeah, 10 meter per second square is also the acceleration of this guy. So 24th ka B. Nice, I guess. Yeah, makes sense. Okay, 25th. 25th is in a system shown the pulleys and springs are massless, friction is absent everywhere. A block of mass m equal to 20 kg is attached to the movable pulley. Achha. A constant force applied at free end on the string makes the point of application of forces move down with a constant acceleration of 4 meter per second square. अच्छा, इसका acceleration 4 meter per second square. So string जो नई create है, that's okay fine. तो फिर ये 2 meter per second square होगा ना ऊपर, right? Find the applied force. Okay. Massless pulleys दिए, movable pulley. कुछ और दिया नहीं तो अपन massless जरूर करेंगे. Yeah. मासलेस और स्ट्रिंग, ओके फाइन, वही वैसा ही दिया। सो 20 kg का मास है ये, ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा होगा, ये ऊपर F है, ये ऊपर F है, 2F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज लाइक 2 टाइम्स दिस गाय, सो 40 इज इक्वल टू 2F, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स, नहीं 2F इज, फाइंड द अप्लाइड फोर्स ऑफ कोर्स, सो 2F इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ग्रेविटी भी तो है ऑफ कोर्स। इसका पूरा एक्सेलरेशन क्या है, इसका पूरा एक्सेलरेशन है ऊपर 40 न्यूटन्स, राइट।
मतलब वो, हाँ तुम समझ गए हो ना, ऊपर का फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस गाय। और ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी इज 200, सो लाइक 240, तो उसका आधा, इट्स गोना बी 120 न्यूटन, सो 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. A projectile is required to hit a target whose coordinate relative to the horizontal and vertical axis through the point of projection are alpha and beta. Okay, if the projectile velocity is this thing, it is what? It is impossible to hit the target if. अच्छा, velocity दी भी अपने को. अच्छा ठीक है. तो ये एंगल अपने को दिया रहेगा, आई गेस. ओके ठीक है ना, नो नो बिग डील, वी कैन डू दिस थिंग. सो लेट्स जस्ट से कि वो यू एक्स और यू वाई वेलोसिटी के साथ में अपन ने छोड़ा था, देन इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट्स गोना बी बेसिकली लाइक यू एक्स टी माइनस जी अपॉन टू टी स्क्वायर, एंड देन दूसरा जो रहेगा, सॉरी ये तो वाई के लिए चाहिए ना, ये वाला टर्म चाहिए, देन यू गॉट यू वाई टी माइनस जी अपॉन टू टी स्क्वायर, राइट. और ये जो चीज़ है दैट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी अल्फा, राइट. सो टी इज जस्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू जी अल्फा अपॉन यू एक्स. करो इसे पुट. या वेट, अच्छा ये वेलोसिटी नहीं है अपने को, सॉरी सॉरी फॉर दैट, रोटेशन वेलोसिटी इज गिवन. अच्छा ये अल्फा और बीटा, फाइन ऑफ कोर्स. सो ये जो चीज़ है दैट्स इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू बीटा, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. ओके कूल, then we can do this. T is equal to ux upon alpha, put that in this thing, it's like beta is equal to ux uy upon alpha minus g upon 2, sorry it should be alpha upon ux. क्या कर रहा हूँ मैं आज, दिमाग है कि नहीं इसमें. beta is equal to uy upon ux alpha minus g upon 2 times c सारी चीज, like g upon 2 times alpha squared upon ux square, right? Yeah, sorry. Okay. हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ux स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ. लाइक एक काम करो ना, बिकॉज़ ux uy की जगह पे x और y यूज करते हैं, लाइक बीटा x स्क्वायर इज इक्वल टू xy अल्फा minus g upon 2 alpha square. That should be doing it. So yeah, does that make sense? So like ये उधर भेज दो, हो जाएगा g upon 2 alpha square is equal to alpha times of xy minus beta square, right? Oops, sorry, minus, ये क्या किया ये? Okay, alpha xy minus alpha, so minus beta x square. That's not good actually, right? अच्छा अपने को डायरेक्टली just you have to figure out what the thing is, right? So just say x is equal to this times cosine theta, वो काम कर देगा, right? Yeah. So x का square of course is gonna have this thing, so 2g beta alpha, और यहाँ पे जाएगा cosine square is equal to xy में भी सेम चीज like 2g alpha, but यहाँ पे एक और अल्फा है 2g alpha square. Yeah, right, that should be doing it. Okay, and that times of sine times cosine minus g upon 2 alpha square, so g alpha हर जगह से हटा देते हैं, it's gonna be like 2 beta cosine square is equal to 2 alpha sine cosine minus alpha upon 2, right? So ये हो जाएगा 4 beta c square is equal to 4 alpha कॉमन ले लेना यार, alpha times of 4 sc minus 1, so beta is equal to alpha times 4 sc minus 1 upon 4 c square, which is like alpha, and then ये पूरा करने के बाद में हमें मिलेगा like 4 ये कैसे हो जाएगा, so tan, right? So 4t minus 4, so 1 upon 4, अच्छा ये तो 1 था वहाँ पे, सॉरी, so हो जाएगा tan minus 1 upon 4 secant squares, like 1 upon 4 times of 1 plus t square basically, and t of course is something in 0 to infinity, right? Yeah, it's gonna be equal to alpha times of क्या है, -1/4 t square plus t -1/4, राइट. इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती है, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, व्हेन t इज इक्वल टू नेगेटिव, क्या हो जाएगा, -1/2 इज लाइक 2 times of -1/4 सपोज्ड टू बी इक्वल टू 2. सो जब भी t 2 होता है, इन दैट केस व्हिच इज पॉसिबल, इट इज रियली पॉसिबल, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइक बीटा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा टाइम्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज -1 plus 2 because t is 2 and then -1, and that's supposed to be 0. ये तो सही नहीं हुआ.
Sorry, it's not negative 1/4 over there. That should be making sense. So ये हो जाएगा just 1 minus 1/4, that's 3/4. So beta is less than or equal to 3/4 of alpha. So A is the answer. Next, 27. 27 is the acceleration of B is. So A और ये B दिया है, the acceleration of B is. So ये ऐसे जा रहा है and then क्या सिस्टम है यार, ये तो बहुत खराब दिख रहा है मुझे. So B is in contact with this thing and can only move in this direction and in this direction, right? Yeah. Wait, I think अच्छा एक काम करो ना, सोचो कि ये जो छोटी सी स्पेस है इस वजह से ये आगे जा सकता है. ये वाली जो सरफेस है ये आगे जा सकती है. सो इनफैक्ट ये सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है. दैट्स द ओनली थिंग. राइट, ओके, दैट मेक्स सेंस. और ये ऐसे जा रहा है, राइट? सो थिंक अबाउट इट, जो पूरी सरफेस है इट्स मूविंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन a व्हाटएवर, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, अल्फा 1, राइट, विथ दिस एक्सिस. ओके, और यहाँ की जो सरफेस रहेगी, जो बी की सरफेस रहेगी, तो द होल थिंग इज लाइक मूविंग. वेट, आई थिंक क्या ये स्मूथ है कि क्या है? ये तो स्मूथ है फॉर श्योर. इज दिस रफ और व्हाट? क्या ये प्योर रोलिंग कर रहा है? हो क्या रहा है? तो मुझे बताओगे तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको. एंड इज दिस रफ और नॉट? आई थिंक बी स्मूथ है और वो वॉट एवर, जस्ट अज्यूम इट्स स्मूथ. ओके, इन दैट केस एक्सेलरेशन ऐसा है एंड इट्स मेकिंग व्हाट एंगल? It's making alpha 2 with the thing, right? This is alpha 1, this is alpha 2, of course. And ये जो दो surfaces है इनका acceleration relatively सिर्फ parallel में जाना चाहिए. It should not be की perpendicular supposed to be है. So what does that mean? That means that a cosine of alpha 1 is equal to इसको b बोल दो, like b cosine of alpha 2, and that's why b is just equal to a cosine alpha 1 upon cosine alpha 2, right? So it's gonna be A, I think. 27 A. Next. 28. 28 is a block of mass 10 kg is released on a fixed wedge inside a cart which is moving with constant velocity of 10 meter per second towards right. Okay, mass 10 kg released on a fixed wedge. ये wedge है. Moving with constant velocity towards right. What? 20. कितना? 10 meter per second. Okay. The initial velocity of the block with respect to the cart is 0. The work done by normal reaction with respect to ground. अच्छा, ये जो है ये initially 10 meter per second है, right? कि ये एक्चुअली में constant velocity ही है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है. आई थिंक हाँ, constant velocity ही है ना, ऑफ कोर्स वो दिया हुआ क्वेश्चन में. सो दिस इज अ इनर्शियल फ्रेम बेसिकली. सो सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट इज 0. ये जो ब्लॉक है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ओके, द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकंड्स. अच्छा, 2 सेकंड्स में, राइट? ओके, एज अ नॉर्मल रिएक्शन, बट नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक दैट थिंग. Right, okay, this is actually moving like this with respect to the cart, but cart ऐसे move कर रहा है, right? So ये जो है, right, इसकी पावर क्या रहेगी? This normal force times ये वाली velocity. So ये तो velocity मतलब है ही नहीं, वो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा. So इनका अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, right? Yeah, of course. So ये जो normal force, I guess that's a constant because अच्छा नहीं, okay, it's like ये हमेशा कांस्टेंट ही ऐसा हो रहा है, राइट? इसका एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक मूविंग. ओह गॉड, नॉट नाइस यार. सो इसका कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सो जस्ट mg cosine theta like this thing. So n is also just mg cosine theta because tangential acceleration that should be the only thing. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो चीज है जस्ट mg cosine theta, राइट? दैट मेक्स सेंस. सो इनका डॉट प्रोडक्ट इज लवर पावर एंड देन फॉर सम टाइम काम करेगा, 2 seconds. हाँ ठीक है ना, it will be the thing. So what is this? mg, mass is 10, g is 10, cosine theta is 4/5 times, oh by the way अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. ओके, सो ये अपने को डॉट प्रोडक्ट में इनके बीच का एंगल कितना रहने वाला है, राइट? इट विल बी 53 डिग्री. सो उसका कोसाइन क्या होता है? 3/5, राइट? एंड देन ये अपने को पावर और एंड बाय अपने को 10 भी मल्टीप्लाई करना है. वेल दैट 10 इज बिकॉज
ओके ये मास है, ये ग्रेविटेशन, ये जी है, ये वो वेलोसिटी है, ये दो कोसाइन वैल्यूज है, राइट, एंड देन दिस थिंग टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड व्हिच इज 2 सेकंड्स, राइट। कूल। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, it's going to be 10 times off, so 8 times 6 times 2, I guess 12 हो गया, ये it's going to be 8 and 16 is 96, 960, so D is the answer. Next, which is in ground frame, right, तो अपने ground frame में किया है, that should make sense. Okay, next, yeah, sure. 29. 29 is a particle projected from horizontal plane xz plane such that its velocity vector at time t is given by this thing. Okay, its range on the horizontal plane is given by velocity vector अपने को दिया है particle from horizontal plane xz plane whatever. अच्छा तो y is perpendicular to that, right? Its range on the horizontal plane is ठीक है ना, कर सकते हैं, no big deal. So ये कब and t equal to 0 पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, right? Okay, so फिर 2b upon c is the time required for it to drop down, of course. और फिर उसमें तुम्हारी रेंज ठीक है ना, a like 2ab upon c, so 29 का आंसर a. Next question, 30. 30 is a weight w supported by two cables as shown. The tension in the cable making angle theta with the horizontal will be minimum when the value of theta is weight w supported by two cables as shown. ठीक है, टेंशन इन द केबल मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अच्छा अच्छा, ये अपने पता नहीं क्या थीटा है, विल बी मिनिमम व्हेन वैल्यू ऑफ थीटा इज, और ये इक्विलिब्रियम में आई गेस. ओके सो इट्स लाइक ठीक है ना, नो बिग डील. सो ये जो भी वेट T2 T1 जो है आर दीज लाइक, so we want the tension to be minimum, right? Of course we want this thing. Okay okay, समझा मैं क्या हो रहा है. Yeah okay, so right, okay, it should just be in this direction and whatnot. T1 अपने आप बैलेंस हो जाएगा. Okay, interesting. So the only thing is कि ये जो फोर्स रहेगा, लाइक ये वाला फोर्स एंड देन ये वाला फोर्स, इनका जो रिजल्टेंट रहेगा दैट शुड बी अलोंग, सो एक्चुअली अपोजिट टू T1 एंड देन इट्स ओके, तो T1 कुछ भी ले सकता है इन दैट केस, राइट. या सो अलोंग T1 क्या क्या हो रहा है, अलोंग T1 तो चाहिए बट उसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो आपको कैंसिल कर दें, दैट्स द थिंग ऑफ कोर्स. तो इनके बीच में एंगल क्या है, ये 60 डिग्री है, ये थीटा है, दिस इज पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री which is right 120 degree minus theta, right, that's this angle I guess. Yeah okay, ये जो एंगल रहेगा कोसाइन ऑफ दैट का है वो परपेंडिकुलर रहेगा इसे, राइट. सो T2 कोसाइन ऑफ दिस थिंग दैट शुड बी इक्वल टू, सो ये जो ग्रेविटी है, राइट, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, तो ये तो 60 है ना, ये 60 रहेगा, ये 30 होगा, सो mg टाइम्स कोसाइन 30, राइट. या कोसाइन 30 is of course square root 3/2, I should be doing it, right. So when is T2 going to be the minimum, that will happen whenever this is maximum, right. Yeah, और ये मैक्सिमम कब रहता है, when it's 1 of course, और ये 1 होता है whenever theta is equal to 120 degrees, वो तो पॉसिबल है नहीं. So okay, maximum that theta can be is, oh god ये अजीब है, this angle is like of course it's 120 minus theta, right. Sure, तो when is this going to be the minimum, that's what we ask. ये मैक्सिमम कब रहेगा, so theta can at max be pi upon 2. अपनी को of course इसको नेगेटिव रखना है नहीं. क्या मैंने सही से किया इसको, कोसाइन 30 डिग्री नहीं है यार, यहाँ पे साइन 30 डिग्री चाहिए था अपने को, राइट. so 1/2, बट स्टिल वही कंडीशन है ना कि वी शुड हैव दिस थिंग बीइंग द मिनिमम. या ऑफ कोर्स बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, जस्ट वांट दैट टू बी एंड या राइट, दैट्स गोना मेक सेंस. सो राइट ओके, सो टेंशन केबल ओके, तो कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ऐसा होगा, आई गेस पाई अपॉन 2, बिकॉज तब ये जो चीज रहेगी दैट विल बी मैक्सिमम. या सो 120 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा कैन गो फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, 0 पे ये 120 डिग्री है एंड देन 90 पे ये 30 डिग्री है. सो
या ओके इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग 120 से छोटा छोटा हो रहा है एंड देन अभी भी नेगेटिव है एंड देन एट सम पॉइंट ये जस्ट जीरो हो जाता है राइट सो इट्स कंप्लीटली वर्टिकल एट दैट पॉइंट और तब टी वन का ऐसा आना चाहिए राइट एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज राइट तो मैक्सिमम रहेगा व्हेनेवर थीटा इज 5.2 सो ये हो जाएगा 30 डिग्री सो साइन 30 डिग्री इज ऑफ हाँ लाइक थीटा शुड बी 5.2 और वो है कि नहीं अपने क्वेश्चन में दैट डजंट मेक एनी सेंस हाँ ओके साइन ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं आखिर और साइन नहीं अपने को साइन चाहिए राइट तो अपने को इसको मिनिमम सॉरी इसको मैक्सिमम करना है और ये क्या होता है व्हेनेवर दिस एंगल विल बी पाई अपॉन 2 तो दैट विल हैपन व्हेनेवर थीटा इज 30 डिग्री सो 30 का आंसर नेक्स्ट 31 31 is if in the arrangement shown motor runs winding rope at a rate of v meter per second the upward speed of the what platform okay will be motor runs winding rope at कौन सी मोटर अच्छा ये मोटर राइट तो ये जो है दैट्स एट वी फाइन द अपवर्ड स्पीड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अच्छा ये पूरी अच्छा ये पूरा प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल सपोज इसकी स्पीड v है और ये तो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं मुझे वियर्ड व्हाटएवर अच्छा ये ऊपर जा रहा है मतलब ये जो है ये कम हो रहा होगा v से तो फिर ये नीचे जा रहा होगा सो वो या मतलब कि इसकी स्पीड v ऐसी रहेगी या ओके मैं इसको बस ड्रॉ कर रहा हूँ यू नो ये ऐसा है देन यहाँ पे मोटर है राइट ओके सो सपोज इसकी जो स्पीड है दैट्स u ओके इन दैट केस यू नो ये स्ट्रिंग u से कम हो रही है देन दिस मस्ट इंक्रीज बाय u तो फिर इसकी स्पीड u होगी राइट बट देन इसकी स्पीड u है और फिर ये अब 2u से कम हो रही है दैट जस्ट मींस कि ये जो राइट ये जो स्ट्रिंग है दैट शुड गो डाउन बाय 3u एक्चुअली राइट सो इसका जो या लाइक दैट्स गोना गो डाउन बाय 3u या आई गेस दैट मेक्स सेंस वेट बट वेट अ सेकंड अच्छा अपने क्या बोला ये v है ये v है राइट अच्छा इसकी स्पीड तो ऊपर v थी ऑफ कोर्स और ये u था नीचे राइट ओके और ये नीचे u जा रहा फाइन इन दैट केस u plus v is how much this is increasing so u plus v wait नहीं वो डिक्रीज कितना हो रहा है दैट्स u plus v oh god but then this should increase right अरे वो स्ट्रिंग अंदर जा रही है ऑफ कोर्स सो रेट उसका v मीटर पर सेकेंड है या ओके दैट मेक्स सेंस श्योर ये जो स्ट्रिंग है ये कितने से कम हो रही है कितने मीटर पर सेकंड से कम हो रही है ये नीचे u है और ऊपर u है लाइक 2u इज द रेट एट विच दिस इज डिक्रीजिंग उतनी स्ट्रिंग यहाँ पे ये खा ले रहा होगा राइट नहीं वो यार यहाँ से कम हो रहा है राइट ऑफ कोर्स सो एक्चुअली ये नीचे u से आ रहा है राइट ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा ये जो लेंथ है ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये ओह गॉड या सो पर सेकंड क्या हो रहा है पर सेकंड ये चीज u से नीचे आती है राइट ओके और यस लाइक ये जो पूरी स्ट्रिंग थी पहले पूरी जो लेंथ थी यहाँ तक की सो ये चीज ये है ये चीज ये है पर 1 सेकेंड ये u से नीचे आ गया ओके सो लाइक अब ये u हो चुका है ये पूरी जो लेंथ है दैट्स u सॉरी या एंड वी नो दैट 2u इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग जो कि अब गायब हो गई है राइट ऑफ कोर्स ओके सो अब जो नई स्ट्रिंग है एंड बाय द वे ये भी ऊपर जा रहा है u से राइट सो एक्चुअल में दिस इज गोइंग अप बाय u सो ये u से ऊपर जा चुका होगा तो जो बची हुई लेंथ है राइट सो टोटल लेंथ माइनस बची हुई लेंथ मतलब कि वो हो जाएगी u एंड u सो यहाँ ऑफ कोर्स 2u इज द लेंथ जो कि इस पूरे सेगमेंट में से गायब हो चुकी है राइट नहीं वो क्या कर रहा हूं मैं आखिर कुछ भी तो गड़बड़ हो रही है राइट इसमें से भी गायब हुई राइट ओके इसमें से क्या क्या गायब हुआ इस सेगमेंट में से गायब हो गया u एंड u इस सेगमेंट में से गायब हो गया u एंड u ऑफ कोर्स या तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में 4u टाइम्स 1
उतनी लेंथ गायब हो चुकी है 1 सेकंड में, तो उतनी लेंथ इसने खा ली होगी, उतना ही है ना यार। हाँ, सो देन v मस्ट बी 4u, सो u मस्ट बी v अपॉन 4, सो 31 का आंसर b। ओके नेक्स्ट 32। 32 is I am sitting in a car which is undergoing acceleration in the forward direction of magnitude A. I feel a force pushing me horizontally backwards into the back of car seat. अच्छा, तुम कार में हो, तुम्हें एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फील हो रहा है। ओह अच्छा, कार undergoing acceleration in forward direction, right? I feel a force pushing me horizontally backwards. Okay, if my mass is m and the acceleration due to gravity is g, what is the magnitude of this force? Of this force, right? That's gonna be ma, of course. जो force में पीछे push कर रहा है, it's gonna be, of course, is ma. Yeah, of course. तुम्हारा जो normal force है from the seat, right? वो कितना है? That's going to be mg, right? और जो तुम्हारा back rest है, वहां से तुम्हें ma force मिल रहा है basically. Yeah, so ma is the force. What's the big deal? ये सब क्या है? 32 का आंसर सी होना चाहिए। I don't know ये सब क्यों दिया इसमें। 33 करते हैं। A particle projected with speed u at an angle theta from horizontal at t equal to 0. Its horizontal component of velocity varies with time t as shown. अच्छा, velocity is varying with, हाँ ठीक है ना, horizontal component, right? अच्छा, projected with angle u, हाँ of course, right. तो अच्छा, अपने को ग्राफ बताना है कौन सा है। It's remaining constant of course. Horizontal component, right? That remains constant. Vertical changes. Okay, yeah. So B is the answer. ये क्या yes question था? 34. 34 is a block of mass m is pulled in a direction shown in the figure on a rough horizontal ground with a constant acceleration of magnitude a. Okay, it's a block of mass m pulled in a direction shown in the figure. कौन सी डायरेक्शन यार? चाहे किस ये डायरेक्शन नहीं, बट ये तो ओके। ये स्ट्रिंग क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है ना, अपने को निकालना क्या, ये तो बताओ मुझे। द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट, आई गेस तो मैं एक्सेलरेशन निकालनी है, राइट? ओके, और टी क्या है? आई गेस दैट्स टेंशन, ठीक है। सो टी कोसाइन थीटा माइनस म्यू एम जी अपॉन एम, दैट्स गोना बी द एक्सेलरेशन। अब इसमें कहीं अपने को दिया क्यों नहीं है? आई डोंट नो। ठीक है, अजीब क्वेश्चन है, इसको बस आगे, या ये अजीब था। 34 पता नहीं क्या हुआ। 35th 35th is a block B moves with velocity u related to the wedge A. Okay, if the velocity of the wedge is v, ठीक है, तो this is going with u, this is fine. What is the value of theta so that the block B moves vertically as seen from the ground? ठीक है ना, so yeah, like ये u ऐसा है, ये v ऐसा है, ठीक है। अब तक चाहिए it should just move vertically, तो उसका horizontal component हटा दो, that's the only thing. So like u cosine theta must be equal to v, so cosine theta is equal to v upon u. Yeah, which means it's cosine inverse of e upon u. So 35th का आंसर है B. Next question, 36th. In the figure, let A and T be the acceleration of the blocks and tension in the spring respectively. So string respectively, ठीक है। T be the acceleration of the blocks and tension in the string. इसमें tension and acceleration, fine. The string and pulley are frictionless and massless. Which of the graphs show the correct relationship between A and T for a system in which sum of the two masses is constant? So m1 plus r, ठीक है ना, ओके, m1 plus m2, ठीक है ना, ये नीचे जाने वाला है, whatever. So acceleration तो constant है, that's the thing, acceleration is constant. A and T, yeah, what's the big deal, huh? Sum of the two masses m1 m2 is constant, okay. अच्छा, A वर्सेस टेंशन टी, मुझे लगा टाइम कर, हाँ ठीक है, सो A वर्सेस टेंशन, फाइन, sorry. Yeah, it's okay, let's just do that thing. So g minus t upon m1 is equal to A, and ये ऊपर जा रहा है, like t upon m2 minus g is equal to A as well, right? तो अपने को g नहीं चाहिए, just add these up, like t times of 1 upon m2 minus 1 upon m1 is equal to A. So it's a linear graph basically, right?
या और ये चीज है राइट. सो m1 इज लार्जर. सो ऑफ कोर्स ये चीज पॉजिटिव है राइट. सो जब टेंशन इंक्रीज होगा देन एक्सेलरेशन गोना इंक्रीज ऑफ कोर्स. इज दैट करेक्ट? करेक्ट तो कर रहा हूँ ना ये. आई मीन ऑफ कोर्स a मस्ट बी पॉजिटिव एंड देन t इज आल्सो पॉजिटिव. सो दोनों पॉजिटिव है. ओके. ये जो स्लोप है क्या वो पॉजिटिव? क्या कोई इनिशियल टेंशन था इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई होना चाहिए. ये सब क्या है इन दैट केस? टेंशन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल राइट. तो oh it should be 2a but whatever, same stuff right. ये क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब ये what's this a square? What? I don't know. कुछ तो अजीब किया इन लोगों ने. This is very weird. Just move on. Okay. Yeah, this doesn't make any sense. Exactly क्या करने को बोल रहे थे ये? Sum of the masses is constant, हाँ? Oh, अच्छा मास चेंज हो रहे. ओके ओके. ऐसा बोलो ना यार. मास चेंज हो रहे हैं. Right. And is gravity changing or not? I don't know. Let's assume कि वो change नहीं हो रही है. So only masses change and gravity doesn't actually change, right? So with that assumption, अपने को सिर्फ m1 m2 को हटाना है. And okay, m1 plus m2 is constant, right? So just gotta solve for m1 from this thing, yeah. G minus a, uh, okay, m1 doesn't okay. T upon this guy. That should be the thing. Or so the ratio like okay plus T upon G plus a. ये जो चीज रहेगी that's actually some kind of constant. That's what it's. Yeah, okay. तो इसका मतलब है कि t times of 2g upon g square minus a square is equal to some kind of constant, which means that 2gt is equal to, and this constant is like a positive value. So c times of g square minus a square. And we want t versus g. So फिर t is just equal to negative c upon 2g times a square plus cg upon 2. That should be doing it. तो ये कोई तो भी टाइप का कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, राइट? इट्स लाइक या y इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा एंड देन स्लोप इज एक्चुअली नेगेटिव. सो इट्स गोना बी दिस थिंग. b इज द आंसर. यहाँ पे दो है यार. ओ दैट्स 1 upon a square नॉट ओके. सो इट शुड बी b. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ये तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि h में m1 और m2 जो है वो वेरिएबल है. 37th. Okay, a body is projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal. The velocity of the body will become perpendicular to the velocity of the projection after time t given by. क्या क्वेश्चन है? क्या ये u at an angle theta with the horizontal? ठीक है ना? u cosine theta and then u sine minus gt. That's the thing. So we want this velocity to be what? Become perpendicular to the velocity of projection. अच्छा, so projection पे velocity क्या थी? It was just u cosine theta comma u sine theta. We want a dot product to be 0, of course, like u squared c squared plus u squared s squared minus u s gt. That should be equal to 0, which means u is equal to s gt. So t must just be u upon sine theta in that times gravitational expression. So yeah, of course that's gonna be D answer. Next, 38. 38 is a ball is thrown from a point on the ground at some angle of projection. Okay, at the same time a bird starts from a point directly above the point of projection at a height h horizontally with speed u. अच्छा, एक बॉल को थ्रो किया on a ground at some angle of projection. Okay, a bird starts from a point directly above, ठीक है, with speed u. Given that its flight ball just touches the bird at a point. Find the distance on ground where the ball hits. मतलब वो h basically. Yeah, okay, fine. And speed b में, right? Oh, it's u. So इसकी horizontal velocity u होनी चाहिए. That's for sure. और ये h टच करता है, right? So what do you know? v square minus u squared. वो चीज करो. So u squared क्या रहेगा उसकी? जो vertical velocity है उसको मैं क्या बोलता हूँ? u y का square. That is equal to 2as, right? So like 2g times जब भी हाइट थी, so 2gh, that's gonna work, sure.
Yeah. So अपने को vertical velocity मिल गई. What do you want? Find distance on ground where the ball hits. See, now you know what uy is. It's like square root of 2gh. So time required is going to be 2 times of distance, like 2 square root of 2gh upon g, right? Yeah. And that times the ux thing, which is just u. So that should do it. So 2u and then square root of 2h. Okay, so C is the answer. Next question. 39. 39 is particles A and B are moving with constant velocities along x and y axis respectively. The graph of separation between them is with time is given. Okay. So क्या होगा ग्राफ? ठीक है. A and B moving with constant velocities along x and y. Okay. A or B. अच्छा ठीक है ठीक है. The graph of separation between them. So with respect to B क्या हो रहा है? A जो है it's just moving like ऐसा कुछ तो भी. Yeah, okay, it's moving like this thing. So just some kind of line, of course. So उसका जो separation है, how does that change? At some point it's going to be the minimum और फिर बाद में वो change होगा. Yeah. Okay, think about it. जब भी minimum होगा मैं उसको T0 बोल रहा हूँ. उसके बाद में so this whole length will be जो भी उसकी velocity होगी, right? So A की जो भी velocity होगी with respect to B, let's just call this as V, whatever. So it's going to be V times of T minus T0. ये distance cover हो जाएगा, right? Okay. Yeah. And then this distance is kind of constant, so इसको h0 बोल दो, जो भी है r0, तुम्हें जो भी बोलना है इसको. तो ये डिस्टेंस कितना रहने वाला है? इसका स्क्वायर रूट ऑफ वो सब. या ओके, उसका अपने को रेसिप्रोकल चाहिए, राइट? बिकॉज़ 1 अपॉन नहीं, ऐसा नहीं, अपने को सिर्फ सेपरेशन चाहिए, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. दैट मेक्स सेंस. सो इट्स r0 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टाइम्स t minus t0 का स्क्वायर. दैट्स गोना वर्क. Yeah, so इसको मैं s बोल देता हूँ, सेपरेशन. So it's like s square is equal to r0. हाँ, I guess it's something like a hyperbola. Yeah, yeah, right. It's kind of a hyperbola, isn't it? It was a hyperbolic curve concept. अच्छा, ये तो पूरा का पूरा घटिया है. इसमें एकदम से शार्प चेंज हुआ, वो सही नहीं है. यहाँ पे ये क्या हो गया अचानक से एकदम? हाँ, doesn't look good, does it? No. इसका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है. t equal to not. That is not correct, यार. We know it's supposed to be like this kind of a curve. S square is equal to r0 square plus. एक काम करो, t minus t0 को just say t dash like v square t dash square. So it's like saying s squared. So अच्छा, मैं x square upon y square इसमें लिखता हूँ ना. It will be t dash का square upon r0 का. अच्छा, उधर भेज देंगे ना. Okay, fine. So it really is like s square upon r0 squared minus v squared t dash square upon r0 squared is equal to 1, right? So if you think about it, it's some kind of a hyperbola, right? It's like v squared. And the hyperbola, okay, यहाँ पे y होना चाहिए और यहाँ पे x होना चाहिए, right? So yeah, that's the kind of hyperbola we look for. हाँ ठीक है, I think D is the only thing that it could be. So ये तो hyperbola जैसा दिख नहीं रहा है मुझे. So D is what it is. So ठीक है ना, 39 का D. And of course it's symmetric रहने वाला है, right? About some point. And this doesn't look like hyperbola. So there we go. Next question. 40. 40 is a man is crossing a river flowing with velocity of 5 meters per second. He reaches a point directly across at a distance of 60 meters in 5 seconds. His velocity in still water should be. अच्छा, his river velocity 5 meters per second है, which is a point directly across. और कहाँ पे स्टार्ट किया इसने, जो भी कहाँ पे स्टार्ट किया. ओके, इन 5 seconds डायरेक्टली. अच्छा ठीक है, तो आई गेट इट. So ये जो 60 है, इसका like 60 like that. Okay, cool. In कितने 5 seconds. So 60 upon 5 is going to be 20 meter per second is that velocity. तो ये 20 meter per second ऐसे जा रहा था, and then v ऐसे, तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, right? So 5 there, 20 there. Oh, sorry, it's not 20, it's 12. So 5 ऐसा, 12 ऐसा, it should be 13 like this. Velocity in still water should be 13. 40 का आंसर B. Next question, 41.
A motorboat is to reach at a point 30 degree upstream with respect to normal on the other side of a river flowing with velocity 5 meter per second. Sure. ठीक है वैसे normal. Okay. Velocity of motorboat with respect to water is 5 square root 3. The driver should steer the boat at an angle. So with respect to steam direction. Oh God. Normal on bank. Okay. That's the starting point. ठीक है ना करना पड़ेगा आपको कोई. So river is flowing with 5 meter per second. Okay. और अपने को ऐसे जाना है right? And so this is at 30 degrees of course. And you are saying कि जो 5 square root 3 है वो velocity है right? Hey, I know क्या हो रहा है यहाँ पे. So we know कि tan 30 degrees is 1 upon square root 3. Yeah, of course, it's going like this. Normal, of course. So 5 square root 3. तो क्या हो जाएगा ये यानी ये एंगल जो रहेगा that's going to be 30 degree as well, right? ये 5 है. तो yeah, basically हो गया ना. खत्म हो गया पूरा problem in that case. So अब क्या है? 120 degree with respect to the stream direction? No, it's 60 degree. 30 degree with respect to normal to the bank. Sorry, to the bank. No, it's along the normal to the bank. Oh, and with respect to stream direction, it's going like this. Yeah, that's gonna work. 30 degree with respect to the line of destination from starting point. No. Oh yeah, okay. Actually, yes. It should be like so. I think C is correct. 41 ka C. Next, 42. A flag is mounted on car moving due north with velocity of 20 km per hour. Okay. Flag is mounted on car moving due north with some velocity. Strong winds are blowing due east with velocity of something. The flag will point in the direction. Ah, come on, seriously. Okay, okay, let's do it. Strong winds are blowing due east. So like inertia के वजह से हो रहा है सब कुछ. Yeah. Okay, cool. It's like due east. Whatever. Like with respect to the car. Yeah. वो विंड कहाँ पे जा रही है आई गेस अपने को वो ढूंढना है राइट ठीक है सो कार कैसे जा रही है ऐसी 20 इन नॉर्थ एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ब्लोइंग ड्यू ईस्ट सो लाइक दिस इन 20 एज वेल सो विद रिस्पेक्ट टू कार ये ऐसा हो रहा होगा राइट सो it's gonna go to the southeast direction flag will point to southeast so 42 का आंसर C next 43 43 is three ships A, B, C moving are in motion. The motion of A as seen by B is V along northeast. The motion of A as seen by B, A, B, C तीन ships है and these are in motion. Of E as seen by the motion of B as seen by C is V towards the northwest. Okay. Okay. फिर तुमने okay. Then as seen by A, C एक काम करो A को ग्राउंड फ्रेम बोल दो A को ग्राउंड फ्रेम बोल देते हैं मतलब लैब फ्रेम जो भी मैं बोल रहा है सो B की वेलोसिटी क्या है V along नॉर्थ ईस्ट तो ये ऐसे जा रहा है ओके एंड द मोशन ऑफ B as seen by C is V along नॉर्थ वेस्ट सो इन दोनों को बस अपने को ऐड करना है इनका सुपरपोजिशन अपने को देगा फाइनली C as seen by V which is of course just like this तो square root 2 V in north it's north yeah so A is the answer next 44 find the acceleration of 3 kg mass when the acceleration of 2 kg mass is 2 meter per second square as shown in the figure so 2 का अपने को दिया हुआ है 2 meter per second square okay 10 इसमें 10 न्यूटन ऐसे लग रहा है then of course it's like 20 okay you get okay इसका acceleration क्या होगा इसका होगा 5 so like 5 minus 3 तो इसका 3 yeah okay तो 10 like 6 तो फिर 6 न्यूटन इसमें ऐसे लग रहा होगा right इसमें मिला हुआ like 2 is the acceleration yeah so 44 का आंसर B ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब 45th मेरे को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने को नहीं ब्लॉक B of mass 100 kg rest on a rough what surface of friction coefficient something block B of mass okay rests on rough surface of friction coefficient 1.1 upon 3 okay the rope is tied
विदाउट मेकिंग द ब्लॉक मूव। अच्छा, इसको ऊपर चढ़ना है और ये मूव नहीं करना चाहिए। राइट, ओके, तो ये तो स्टिल सेम, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है, स्टिल सेम एंगल रहने वाला है। ओके, कोर्स, और ये टेंशन सेम है, अज्यूमिंग कि ये मासलेस है। Understanding. So we want the maximum acceleration with which point A can move. तो A जो सिस्टम रहने वाला है, इस पे ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है ऑफ कोर्स, और नीचे ग्रेविटी लग रही है, राइट? या और ये ऊपर जा रहा है बेसिकली। सो T अपॉन M इज इक्वल टू इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, राइट? Yeah, actually नहीं, T upon M minus G is equal to the acceleration. Like it's actually equal to A plus G, you can say. ठीक है ना, T equal to A plus G times M ही कर डालते हैं. So M times of A plus G is this tension on this guy, right? So this times cosine, sorry, this times sine of this angle, right? अपने को subtract करना पड़ेगा. Nice. So like capital MG minus ये वाला, so M times A plus G and then inner deal cosine of this angle, cosine theta. Oh, sorry, sine theta. क्या कर रहा हूँ मैं? ये वो vertical force है, right? Yeah, of course. This thing times mu, that's the maximum friction. Yeah. So for critical condition, of course, this must be equal to the vertical force, which is sine. Sorry, the horizontal force, which is just t cosine theta. ऐसे कर रहा था ना, like mu mg minus mu t is equal to, I should say mu t sine theta is equal to t cosine theta, right? Yeah, which means that t is equal to mu mg upon cosine theta plus mu sine theta. That should be doing it. And yeah, okay. अब मेरे को चाहिए क्या है? Oh, and just put t in there. So it's m times of a plus g. Right. Now let's solve. Okay, cosine theta plus cosine theta. So m कितना है? 25 और कैपिटल M कितना है? 100. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बेसिकली. A plus G, A plus G is equal to 4G. म्यू कितना है अपना? 1/3. So 4G upon 3 I guess. उसको 3 को नीचे लेना ना, like 3 cosine theta plus sin theta बोल देंगे. Yeah. And then cosine theta क्या अपना 37 डिग्री. So cosine कितना हो जाएगा? So sine will be 4/5, sine will be 3/5. It's going to be 4 that's like 12 times 3 is 15, taking upon 5 is like 3 once again. There we go. That should be doing it. So 3a is equal to g. A equal to g upon 3. There we go. 45th का आंसर b हो जाएगा. मुझे लगा आपने g को पुट करना पड़ेगा. Whatever. So ऐसे आंसर दिया हुआ है. Let's go to 46th now. A block. क्या भाई? Okay, block placed on a rough inclined plane of inclination theta equal to 30 degree can just be pushed upwards by applying a force F as shown. कहाँ पे दिखाया तुमने? कुछ भी तो नहीं है. Okay, if the angle of inclination of the inclined plane is increased to 60 degree, can be pushed upwards by applying a force F. Fine. Okay, if the angle of inclination is increased to 60 degree, the same block can be prevented from sliding down by application of force of the same magnitude. The question of friction between the block and the inclined plane is. मैं बोला था कि it can just be pushed and it can just be stopped. Yeah. Right. Fine. Let's do this thing. So जब 30 degree है, then it can be pushed up by applying force F. So that's the critical condition, of course. So कितना friction force लगने वाला है? You know, it is mg cosine theta. That's normal force times mu, right? That's the maximum friction force, of course. So that's equal to F. और तुम बोल रहे हो कि जब 60 degree है, oh, it's just cosine 60 degrees by 30 degree by the way, right? So basically like F is equal to square root 3 upon 2 mu mg. ऐसा बोल दो ना, ठीक है. और उसके बाद में बोल रहे हो कि जब 60 degree है, then it can be prevented. So force इधर है, mg sin theta is what's acting like this. Oh shit, यहाँ पे mg sin theta भी तो रहने वाला है. क्या कर रहा हूँ मैं? This is the friction force plus gravity भी काम कर रही होगी. So yeah, okay, like square root 3 upon 2 times mu plus 1 upon 2 and this times mg. That is equal to the friction. That's equal to the force F. Okay.
or it can just be prevented, fine. तो gravity भी काम कर रही है with F, so like F plus half mg, that is equal to the friction force. In this case, actually, it's like sine of 30 degrees, so it's square root 3 upon 2 mg. That's equal to the friction force, which is like, once again, friction the same, coefficient same, right? We got 1 upon 2 mg. That should be doing it, I guess. Just put that in there. So, yeah, right. 1 upon 2 mg, right? So square root 3 plus 1 upon 2 mg. So mg हटा ही दो ना, यहाँ पे पड़ रहा है. And then ये 2 भी हटा दो. Okay, plus square root 3 mu. That's equal to, ही सिर्फ 1 बच जाएगा. And then okay, यहाँ पे mu भी है. Sorry. So mu should just be square root 3 plus 1 upon shit. That's not nice. इसको अपन ऊपर, oh god, नहीं. यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज कर रहा है ग्रेविटी को, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, राइट? या इट शुड बी नेगेटिव एक्चुअली. सो दिस शुड बी 1 minus square root 3. फाइन फाइन फाइन. ये सब गलत है इन दैट केस. लेट्स डू इट करेक्टली नाउ. ये 1 upon 2 हर जगह पे हटाने वाले हैं. स्क्वायर रूट 3 म्यू प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू म्यू. दैट्स द थिंग. स्क्वायर रूट 3 minus 1 times म्यू is equal to square root 3 oh god minus 1. You should just be 1 in that case. Wait, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ गलत कर रहा हूँ आखिर. जी साइन ऑफ थीटा. Friction is along the force F, right? Oh yeah. So right, it's like ये चीज प्लस ये चीज इक्वल टू 0 ऐसा बोलना चाहिए अपने को. मैंने ये सारी गलतियां इसमें क्यों किया आखिर? मुझे एक्चुअली में फ्री बॉडी डायग्राम इस बनानी चाहिए, यू नो. सो फोर्स F इसमें ऐसा लग रहा है क्योंकि अब अपने को उसको रोकना है नीचे जाने से, तो फ्रिक्शन शुड आल्सो वर्क लाइक दिस. और ग्रेविटी, सो mg sin थीटा कितना होगा? स्क्वायर रूट 3 upon 2 because 60 degree है. Yeah. So what does that mean? And friction force is just, you know, mu times of the whole thing. Like, okay, mu times of mg times 1 upon 2. And what does it mean? Ye plus ye. So square root 3 mu plus 1, right? Plus 1 once again from here. Is it not correct? Yes, like that's plus 1 is equal to, oh, plus mu, sorry, यहाँ पे mu है. It equal to square root 3. That should do it. So mu times square root 3 plus 1 is equal to square root 3 minus 1. तो फिर हो जाएगा basically square root 3 minus 1 upon square root 3 plus 1, which is C. So 46 का C हो जाएगा. Next question. 47th. Okay, with what minimum velocity should block be projected from left end A? अच्छा, left hand A से अपने project करना है towards B so that it reaches other end B of velocity. Okay, okay. ये है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट इज म्यू. ये ऐसे जा रहा है, ये म्यू. ओह, इट्स लाइक देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स लाइक दिस थिंग. इट रीचेस द अदर एंड बी ऑफ द कन्वर्टर, राइट? थिंग इज कि या राइट, ओके, नॉर्मल फोर्स तो वैसे भी ये बैलेंस कर देगा, नो बिग डील. सॉरी. Constant velocity v. Does that really matter in the end? Because अगर ये कहीं भी रुक गया, then it's gonna go back. What must happen is that, yeah, like it should just go over there. Okay. फर्क नहीं पड़ रहा इसमें velocity क्या है. The thing is, it's moving relative to this thing, right? That's all that matters. So yeah, क्या रहेगा? G sin, so like okay, G times mu. That is the acceleration. So यहाँ पे रीच करने के लिए एट मिनिमम वी क्या आएगा? लाइक 0. सो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times of as, which is like okay mu g, and that times of the displacement, which is L. That should do it. Yeah, square root of 2 mu g L, which is B. Next question. 48. Okay, when f is equal to, अच्छा ये क्या है? Refer to the given figure. ओके, क्या ये? अच्छा 5 kg है, and then you got 10 kg और force F. ओके, it's like 0.1 in this direction. ठीक है,
0.3। अगर ये दोनों के दोनों साथ में मूव कर रहे हैं देन ओ अच्छा एफ चेंज हो रहा है राइट। ठीक है, तो 2 न्यूटन वाले दो केसेस है इसमें एंड मैक्सिमम नॉट कॉज ये सिर्फ 52 के लिए। ओके, maximum acceleration of 5 kg block and acceleration wait हाँ also friction base होगा, that's the only thing. Okay, acceleration of 10 kg block when f is equal to 30 newtons, right? तो अपने को 2 न्यूटन है and then finally 30 न्यूटन है, that's the only thing. जब 2 न्यूटन है I guess that both of these are gonna move together or something. अच्छा यहाँ पे क्या होगा 15 times 3 that's like 45 it can oh yeah and then ये हो जाएगा 10, तो दोनों टाइप पे तो मूव भी नहीं कर रहे इनफैक्ट। ओके, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड इज आई मीन पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है सो द फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी यू नो क्या है इक्वल टू एफ ऑफ कोर्स राइट या that's how it should be. So 2 newtons, so 48 का आंसर ए। 49 फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड 5 kg ब्लॉक इज स्टिल 2, so इसका आंसर भी ए। 50 maximum f which will not cause motion of any of the blocks. अच्छा right of course, so any of the blocks right. अच्छा अगर इसको सिर्फ इसको हटाना है लाइक इज इट पॉसिबल कि अपन सिर्फ इसको हटाए तो इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा इट विल जस्ट बी यू नो 10, तो जब ये फ्रिक्शन सो ये एफ जब 10 हो जाएगा इट विल स्टार्ट टू मूव सिस्टम। अगर उससे पहले पूरा का पूरा सिस्टम मूव होना शुरू हो गया तो क्या होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम मूव करने के लिए फॉर दैट राइट क्या ये 15 एंड देन गॉट राइट 15 एंड ओ ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा राइट वैसे ही ये फ्रिक्शन फोर्स काफी बड़ा है इससे सो दैट सेटल्स दैट या मतलब 10 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इसकी ऑफ कोर्स। सो 49th का सी सॉरी 50 वेट मैक्सिमम अपने बची मैक्सिमम एफ ओके दैट्स ए सॉरी सो 10 न्यूटन्स दैट शुड बी डूइंग इट। 51 the maximum acceleration of yeah I mean that must be the case of course what else. Okay, the maximum acceleration of 5 kg block is so इस पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है at max that will just be you know 10 newtons. Okay, so 10 newtons यहाँ पे and then maximum frictions पे लगेगा it's got like wait 10 newtons कभी sufficient रहेगा ही नहीं इसको लाने के लिए right? हाँ क्योंकि ये कितना फोर्स लगा सकता है like okay 5 times 3 15 oh ये कभी काफी रहेगा ही नहीं it will always be zero maximum acceleration कभी zero so हाँ 51 का आंसर C. That's weird. Okay, acceleration of 10 kg block when f is equal to 30 newtons. Yeah, right. Okay, so this is 30 newton. ये maximum friction लग गया इस पे. It will just be like 10 newton in that direction. So 20 newtons in this direction. So 20 upon 10, 2 meter per second square. So इसका आंसर A. 53 करते हैं. A conical pendulum moving in a circle with angular velocity omega as shown. Okay, if the tension in the string is T, then which of the following equations are correct? Tension is T is fine. So T is equal to m omega squared I. And what L है ये जो भी है m omega squared L? No. Why would that? Okay, of course correct नहीं है. तो ये T ऐसा है यहाँ पे tan theta is like okay T sin theta is equal to T sin theta is equal to so angular velocity omega right so it's like m omega squared and then ये radius which is actually just oh wow ये अजीब है ये cancel हो गया and somehow it turns out to be correct so A is correct actually okay weird and of course oh हाँ आपने को देखना है कौन से correct है that's the thing T is equal to m omega squared L and what else upward balance कैसा होगा yeah that's actually right okay so upward balance कैसा होने वाला है T cosine theta is equal to mg. That's all it really is. Yeah. So ये तो correct नहीं है, इसको भी correct नहीं है. That's that. A is the answer. Next. 54 करते हैं. Okay, a car traveling on a smooth road passes through a curved
portion of the road in the form of an arc of radius 10 meter. If the mass of the car is 500 kg, the reaction on car at the lowest point P, where its speed is 20 meter per second, is okay. No big deal. We can do this thing. The thing is like normal minus the gravity, which is like mg. That's the upward force on this clip, which is actually is equal to m omega squared r, right? और एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो इसमें वी अपने को दिया हुआ है, इसका में 400 अपॉन रेडियस कितना है इसमें, रेडियस 10 दिया है. ओके, दैट्स नॉट डू थिंग. और मास है 500 kg. सो n अपॉन m इज इक्वल टू g इज जस्ट 10. अपन अज्यूम करेंगे इट्स 10 प्लस 40 आई गेस 50. सो n इज इक्वल टू 50 टाइम्स कितना, 500 kgs, right? Oh yeah, it's only 25,000 newtons, which is 25 kN. So 54 का answer C. Next question 55. Okay, a man of mass m stands at one end of a plank of length L which lies. Okay shit, क्या टाइम हुआ अभी? अभी टाइम हुआ है, wait a second, 4:36. हाँ, okay, time है, no big deal. So I guess we should stop now. So I'll see you guys in the next video. Bye.